Chapter number 14, Compound Interest. A person takes a loan from institute like bank or Patpedi with fixed rate of interest. एक पर्सन था जिसने लोन लिया था बैंक से या फिर पाटपेडी से, और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो फिक्स था कि कितना इंटरेस्ट उसको पे करना है फॉर दैट अमाउंट. आफ्टर स्टिपुलेटेड टाइम ही रिपेज द लोन विथ सम मोर मनी. तो एक जो पर्टिकुलर टाइम था डिसाइडेड लोन के लिए, वो लोन का टाइम कंप्लीट होने के बाद में ही रिपेज द लोन, वो रीपे कर देता है लोन, लेकिन उसके साथ साथ में वो कुछ और मनी भी पे करता है. द एडिशनल मनी पेड इज कॉल्ड द इंटरेस्ट. जो एक्स्ट्रा मनी उसने लोन के अलावा पे किया, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. वी हैव लर्न द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इंटरेस्ट ऑल्सो. I equals to PNR upon 100. In this formula, I means interest, P means principal, N means number of years, and R means rate of interest at PCPA, that is percent compounded per annum. And this is how the simple interest is calculated. So this is the formula for simple interest. This you have learned in previous years. Now we have to learn what is compound interest and how to calculate compound interest. We will learn how bank charges compound interest for a fixed deposit or a loan. Here one dialogue conversation is given for understanding what is compound interest and how is it calculated. So teacher and student are the two persons between whom the dialogue is taking place. Teacher says, Sajjan Rao takes a loan of rupees 10,000 from a bank at the rate of 10% compounded per annum for 1 year. यहाँ पे सज्जन राव ने एक लोन लिया है ₹10,000 का लोन, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, एंड इट इज फॉर 1 ईयर. हाउ मच मनी इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट ही विल हैव टू पे आफ्टर 1 ईयर. 1 साल के बाद में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और साथ साथ में लोन अमाउंट भी पे करना पड़ेगा. So here principal amount is ₹10,000 and rate of interest is 10%. Number of year is 1 year. He took the loan for 1 year. So according to formula, I equals to PNR upon 100. So 10,000 multiplied by 10 multiplied by 1 upon 100, that is ₹1,000. So interest is 1,000. Therefore after 1 year, Sajjan Rao will have to pay ₹10,000, that is the original loan, plus 1,000 as the interest, that is he has to pay ₹11,000 along with the interest. Now student ask, if a borrower fails to pay the amount and interest after 1 year, अगर 1 साल में वो प्रिंसिपल अमाउंट भी पे नहीं करता है और साथ साथ में इंटरेस्ट भी पे नहीं करता है, then what? So teacher answers, bank calculate the interest after each year. हर ईयर के बाद में बैंक जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द इंटरेस्ट शुड बी पेड बाय द बोरोवर एवरी ईयर. मतलब 1 साल में उसने इंटरेस्ट पे कर देना चाहिए. इफ बोरोवर फेल्स टू पे द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, देन द बैंक कंसिडर द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर टुगेदर एज द लोन फॉर सेकेंड ईयर. मतलब अगर 1 साल में उसने जो अमाउंट था वो लोन अमाउंट भी पे नहीं किया है और इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है, तो इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाएगा अमाउंट के साथ में, और अब अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लोन फॉर सेकेंड ईयर, और उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट अप्लाई होगा. Thus for second year the interest is calculated on the amount formed by the principal of first year together with its interest. मतलब जैसे यहाँ पे 1 साल का अमाउंट जो था वो 10,000 था और इंटरेस्ट जो था वो 1,000 था, तो टोटल पेएबल अमाउंट कितनी हो गई थी 11,000. तो अब अगर उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया और लोन भी पे नहीं किया, तो अब सेकेंड ईयर में जो उसका लोन हो जाएगा, दैट लोन विल बी कंसिडर्ड एज 11,000 एंड नॉट एज 10,000. Okay, that is for second year. The principal for charging interest is the amount of the first year. The interest charged by this method is called as compound interest. इस तरह से जो interest calculate होता है, that will be known as compound interest. Student, if Sajjan Rao increases the duration of loan repayment by 1 more year, मतलब 1 साल का डिसाइड हुआ था लेकिन 1 साल में वो पे नहीं कर सका और 1 और साल उसने बढ़ा दिया, देन
teacher says that then for second year considering rupees 11,000 as principal, interest and amount is to be found out. अब उसका इंटरेस्ट ऐड करने के बाद में कितना हो गया 11,000 हो गया अमाउंट, तो 11,000 will be now principal and then the interest will be calculated. Student, for this can we use the ratio amount of upon principal? मतलब जो अमाउंट है वो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. सो टीचर सेज श्योरली फॉर एवरी ईयर द रेशियो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज कांस्टेंट. मतलब हर ईयर में जब जब वो लोन पे नहीं करेगा और साथ में इंटरेस्ट भी पे नहीं करेगा तो तब तब उसमें ऐड होते जाएगा इंटरेस्ट, और फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद में तैयार होगी, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल. While finding compound interest every year, the amount A of previous year is the principal for next year. जो अमाउंट रहेगी तो वो क्या रहेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल रहेगा. Hence it is convenient to find amount rather than the interest. तो हम क्या करेंगे, अमाउंट ही फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड नहीं करेंगे. So let us write the amount after first year as A1, after second year as A2 and after third year as A3. तो हमने यहाँ पे इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिए. फर्स्ट ईयर का अमाउंट A1 था, सेकेंड ईयर में जब उसने पे नहीं किया तो वो A2 हो गया और थर्ड ईयर में वो A3 हो जाएगा. ओरिजिनली प्रिंसिपल इज P. देयरफॉर अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल मीन्स A1 अपॉन P. A1 is the first year's amount. Therefore, from this formula, we can find A1 equals to P we will take this side, so it will become multiplication. So P multiplied by 110 upon 100. For finding the amount A2 of second year, what we will do? A2 upon A1. A2 upon A1 equals to 110 upon 100. Therefore, A1 को इस साइड लेके चले जाओ. A2 equals to A1 multiplied by 110 upon 100. That is equals to A1 क्या है? A1 is P into 110 upon 100. So replace this A1 by P into 110 upon 100 multiplied by this 110 upon 100 as it is. Now, student, then for finding amount A3 of third year, A3 upon A2 equals to 110 upon 100 again. Therefore, A3 equals to A2 multiplied by 110 upon 100. So now, A3 equals to P into 110 upon 100, 110 upon 100, 110 upon 100. 3 ईयर के अमाउंट को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P से. टीचर, वेरी गुड. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट. Here 110 upon 100 is the amount of rupee 1 after 1 year. To find amount after the given number of years, multiply by the principal by those many times or by this ratio. ये रेशियो हमारा 1 रुपी के लिए है, 1 साल के लिए. अगर हमको मल्टीपल ईयर्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे द प्रिंसिपल बाय दोज मेनी टाइम्स. जितने नंबर ऑफ ईयर्स रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये रेशियो से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. स्टूडेंट, इफ द रेशियो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज अज्यूम्ड टू बी m, let us represent this amount upon principal equals to m. Then amount after 1 year is principal multiplied by m. After second year is principal multiplied by m into m means m square. After third year, principal multiplied by m into m means m cube. So in this way we can find the amount after any number of years. Teacher, correct. If the interest rate is R PCPA, then the amount of rupee 1 after 1 year equals to 1 into m. Okay, that is equals to 1 into m is 100 plus R upon 100. Now 100 plus R upon 100 can be written as 1 plus R upon 100. Okay, see here, 1 into 1 plus R upon 100. 100 multiplied by 1 is 100. 100 plus R upon 100. Okay. So the amount of rupee P, it was about 1. Now rupee P after 1 year will be, replace this 1 by P. P multiplied by 100 plus R upon 100. That is equals to P multiplied by 1 plus R upon 100. Therefore, if the principal P, interest rate R, PCPA and duration is n years, then amount after n years A equals to, this is amount A equals to
p multiplied by 100 plus r upon 100 raised to power n. That means p multiplied by 1 plus r upon 100 raised to power n. N is the number of years. This is the rate and this is the 100. 1 plus r upon 100. Okay. So this is the way how we can calculate the amount. Let us see the solved example. Find the compound interest if rupees 4,000 are invested for 3 years at the rate of 12.5 PCPA. So here principal is given as 4,000, rate of interest is given as 12.5% and number of years is given as 3 years, n equals to 3 years. So let us put these values in the formula. A equals to p into 1 plus r upon 100 raised to power n. So p into 1 plus r is 12.5. 12.5 means 12.5 upon 100 raised to power n is 3. So raised to power 3. So that is equals to p is 4,000. 4,000 multiplied by 1 plus. We can remove this point and include 1 0 here. So 125 upon 1000 raised to power 3. So A will be 4000 into 1125 upon 1000 raised to power 3. So when we will reduce this, we will get here 4000 multiplied by 9 upon 8 raised to power 3. That is, after calculation we will get here 5695.31 rupees. Therefore, compound interest after 3 years I equals to amount minus principal. जो amount है उसमें से हमको principal amount minus करना पड़ेगा. So this is the amount minus principal amount was 4,000. So the calculated amount is now 1,695.31 rupees. This is how we can calculate the compound interest if we are given rate of interest and number of years.